Next discussion of our previous lecture is external features of uh, heart. Okay, in which we will discuss the cardiac apex. What is cardiac apex? Then we will see uh, what is cardiac base. Okay, uh, then we will see the surfaces of heart कितनी है. ठीक है, 3 surfaces हैं. इसके बाद हम देखेंगे borders कौन सी heart के. ठीक है, there is one cardiac apex, then there is one base, 3 surfaces and 4 borders of heart. So in this diagram, you people can see this is the cardiac apex. Okay, and this portion is uh, known as the cardiac, or a bit posterior side of this portion. Right, bit posterior side of this portion is known as the base of heart or cardiac base. Right. Now I'm going to write something about these external features of heart. Cardiac apex. It is conical in shape. It is, आप लोग, you people can see in this diagram, it is conical. ठीक है, cone shape का है the apex of the heart. It is conical in shape, right? And is formed by and is formed by left ventricle, left left ventricle. Okay, left ventricle. It is present in fifth intercostal space. Intercostal space. Okay, and is 9 centimeter away from midline. Okay. As we are just discussing the cardiac apex, it is uh, conical in shape and it is formed by left ventricle. You can see it's a left ventricular portion. Okay, and it is present in fifth intercostal space and 9 centimeter away from midline. ठीक है, आप लोग देख सकते हो कि ये देखो, ये फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस है जिसके अंदर ये अपेक्स थोड़ा सा प्रेजेंट है. सही है, और ये तकरीबन ये मिड लाइन है, दिस इज मिड लाइन. और ये इससे अगर हम यहाँ से इसको मेजर करें तो ये तकरीबन 9 सेंटीमीटर अवे होता है किससे, मिड लाइन से. नेक्स्ट इज कार्डियक बेस. कार्डियक बेस और द बेस ऑफ हार्ट. आप लोग को पता है वैसे जो नॉर्मल क्या होता है, जो अपेक्स होता है किसी भी चीज़ का वो टॉपर होता है. ठीक है, और जो बेस होती है वो जिसको बुनियाद कहते हैं वो नीचे होती है. बट इन केस ऑफ हार्ट, अपेक्स इज डाउनवर्ड एंड बेस इज अपवर्ड. बेस ऊपर वाली साइड पे होती है. ठीक है, आप लोग कह सकते हैं कि वो एट्रिया से मिलकर बनी होती है. और जो अपेक्स होता है वो किस चीज़ से मिलकर बना होता है, वेंट्रिकल से. ठीक है, ओके. तो कार्डियक बेस और बेस ऑफ हार्ट इज फॉर्म is formed by टू एट्रिया. टू एट्रिया, अभी आप लोगों ने ऊपर देखा डायग्राम में, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन क्या है, बेस है. तो हार्ट के ऊपर वाले हिस्से में क्या होता है, एट्रिया. नीचे वेंट्रिकल होते हैं. इसका मतलब बेस इज मेड अप ऑफ एट्रिया. अब हम देखते हैं कि लेफ्ट एट्रिया का कितना पोर्शन होता है उसमें और राइट एट्रिया का कितना पोर्शन होता है. कार्डियक बेस इज फॉर्म बाय टू एट्रिया. ओके, अब इसमें आपको बताता हूँ कि राइट एट्रिया का कितना पोर्शन है और लेफ्ट एट्रिया का कितना पोर्शन है. 2/3. ठीक है, 2/3 पोस्टीरियर सरफेस ऑफ लेफ्ट एट्रियम. लेफ्ट एट्रियम. ओके, या एट्रिया, एट्रिया और एट्रियम. राइट, एंड 1/3 बाय
right, right atrium. Okay, next point इसको लिखो. Next point is it is or it faces backward, मतलब कि थोड़ी सी बैकवर्ड साइड पे होती है, अगर थोड़ी सी पोस्टीरियर साइड पे. It faces backward, backward, upward, and a bit right, a bit right. मतलब कि ये थोड़ी सी दाएं साइड पे होती है पूरी, मतलब कि ऐसे नहीं समझना कि ये दोनों एट्रिया और दोनों, सॉरी, लेफ्ट पूरा एट्रिया और लेफ्ट पूरा, सॉरी, राइट पूरा एट्रिया और लेफ्ट पूरा एट्रिया से मिलकर बिल्कुल नहीं बनी हुई. अभी हमने इसका पोर्शन देखा है कि टू थर्ड जो है वो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ लेफ्ट एट्रिया से, ठीक है, और वन थर्ड बाय राइट एट्रिया से, और ये थोड़ी सी बैकवर्ड, अपवर्ड एंड थोड़ी सी राइट साइड पे करके होती है. अगर आप लोग इसको भी देखो ना, तो इसको मैंने आप लोग कहा है कि ये थोड़ी सी बैकवर्ड एरिया की तरफ भी जाती है, ठीक है. ओके, सो दिस इज द कार्डियक बेस. Now come towards the surfaces of the heart. There are three surfaces of the heart. The first is known as sterno sternocostal surface, right? Means that the surface that is facing towards sternal end, ठीक है, जो कि sternum वाली साइड पे होगी. The next is diaphragmatic surface, मतलब कि ज़ाहिर सी बात है नीचे वाली होगी जो थोड़ी सी डायफ्राम के ऊपर सिट करती है. And next is left surface. Okay, अब हम इनको देखते हैं one by one. It is formed by right atria, right atria, and right ventricle. Okay, it is forward and upward. It is forward and upward. ठीक है, यू कैन सी इस साइड वाली जो सरफेस होगी ना, ये जो कि लेफ्ट एट्रिया और सॉरी राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल से मिलकर बनी हुई है, दैट इज स्टर्नोकोस्टल सरफेस. नेक्स्ट इज डायाफ्रैग्मेटिक सरफेस. इट इज फॉर्म्ड बाय वेंट्रिकल्स. जाहिर सी बात है नीचे वाली सरफेस आपको पता है वेंट्रिकल्स और डाउनवर्ड, नीचे वाली पोर्शन वेंट्रिकल्स की होती है. वेंट्रिकल्स, तो ये वेंट्रिकल्स से मिलकर बनी हुई है चीफली, और यू कैन से बाय मेनली बाय लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट ventricle. Diaphragmatic surface is formed by ventricle or mainly by the left ventricle, right? And it sits, or you can say rests, sets, or you can say rests. It rests on diaphragm. Diaphragm. Next is left surface. It is formed by left ventricle, left ventricle, and partially by left atria. Okay. So this is all about the surfaces of the heart. Three surfaces: sternocostal surface, diaphragmatic surface, and left surface. Come towards the borders of the heart. There are four borders. You can see in this diagram: inferior border, left border, right border, and superior border, or it is also known as anterior border. Okay. Only you people have to remember as superior border.
right border is formed by right atrium, mainly right atrium. Okay, and is vertical in shape. Vertical होता है ये, vertical in shape. Okay, next is left border, formed by left ventricle, left ventricle, and is round in shape. And is round in shape. Okay, next is inferior border, formed by right ventricle, right ventricle, right ventricle, and cardiac apex, cardiac apex, and is horizontal in shape, horizontal in shape. Next is superior border. Next is superior border, formed by two atria. ऊपर वाला ना, two atria with aorta and pulmonary trunk. Pulmonary trunk. Okay. These are three borders with their shapes and contributions of different portions of the heart. We are going to form the different borders. Similarly, these three surfaces contribute different segments or regions or parts of the heart. Likewise, cardiac base, apex, having their own some characters, right? This is all about the external features of the heart, right?